for the technical analysis session 2. Now, today I will take you through the candlestick, chart types in particular. और अगर आपको ये चार्ट टाइप्स समझ में आ गए तो आप बहुत अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हो, बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, क्योंकि जो टेक्निकल एनालिसिस है दिस इज एसेंशियली फॉर द ट्रेडर्स. तो जैसे हमने लास्ट अपने सेशन में समझा था कि टेक्निकल एनालिसिस इज प्राइमरीली an analysis which takes into account huge quantum of information in terms of intraday traded price and opening and closing day prices. What is intraday? So intraday represents जो एक ही बिजनेस जो टाइमिंग है हमारा ट्रेडिंग का टाइम है मॉर्निंग 9:30 से लेट्स से 3:30 तक, तो उस दौरान जो भी प्राइस मूवमेंट्स होते हैं उसको कहते हैं हर एक सेकेंड पे या फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, उसको कहते हैं इंट्राडे ट्रेडेड प्राइस. राइट? तो जो टेक्निकल एनालिसिस हैज अ ह्यूज क्वांटम ऑफ इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ इंट्राडे ट्रेडेड प्राइसेस एंड the opening and closing day prices, right? And the data is represented mostly in the chart types, right? Now these charts, they plot the price information well, and several observations have been made from the formation of similar patterns over a period of time. तो जब हम किसी भी प्रकार का डिसीजन लेते हैं कि खरीदना है या बेचना है या होल्ड करना है, तो हम लोग ये जो चार्ट टाइप्स है इसको समझते हैं और उससे हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे जाकर के मार्केट किस तरफ, मार्केट का रुख आगे जाकर के क्या है. So the chart types and hence the technical analysis, it can help determine who is dominating the market. And जो हम लोग कहते हैं कि आज बायर्स मार्केट है या आज सेलर्स मार्केट है, तो ये सारी जानकारी हमें टेक्निकल एनालिसिस द्वारा जो चार्ट पैटर्न्स हैं उनके द्वारा हमें आसानी से समझ में आ जाती है. लेकिन हमें कुछ इंडिकेशंस जो मार्केट देता है इन द फॉर्म ऑफ द चार्ट्स, ओके, वो हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम वो चार्ट टाइप्स अगर अच्छे से समझ लें तो हम किस प्रकार का डिसीजन लेंगे वो समझ वो बहुत क्लियर हो जाता है कि ऐसी सिचुएशन में हमें अपनी क्या पोजीशन बनानी चाहिए. Shall I take a buyer's position or shall I take a seller's position? Okay. So this information can help the investors to understand the market and achieve their investment goals. So the chart pattern analysis, it can be used for short term और ये लंबी अवधि के लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं. हम इसे एक दिन के लिए भी यूज कर सकते हैं. जैसा मैंने कहा इंट्राडे, तो जिस तरीके से प्राइसेस मूव कर रहे हैं ऊपर नीचे, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द इन्फ्लक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच इज कमिंग इन द मार्केट फॉर दैट पर्टिकुलर डे. तो उस दौरान भी हम इंट्राडे चार्ट देख करके भी हम अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं. तो ये एक 4-5 सेकंड के लिए भी हो सकता है, ये कुछ घंटों के लिए भी आप उसको ऑब्जर्व करके अपना डिसीजंस ले सकते हो, या आप इसको चार्ट पैटर्न को आप लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग के लिए भी यूज कर सकते हो. तो जैसा मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था डाउ थ्योरी, तो वो आप डाउ थ्योरी में आपने देखा होगा कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है, वाज इट बुलिश और वाज इट बेयरिश. तो आप ये सारा चीज एक चार्ट पैटर्न को देख करके आप अपना एक नजरिया बना सकते हो, एक अप्रोच बना सकते हो आगे जाकर के मार्केट में क्या कोई रिवर्सल देखने को मिलेगा या मार्केट वैसे ही उसी दिशा में चलेगा. ओके, रिवर्सल का मतलब क्या है? रिवर्सल का मतलब है, मान लीजिए मार्केट बहुत तेज ऊपर जा रहा है, जैसे मैंने आपको पिछले अपने सेक्शन में बताया था, मार्केट मूव्स हायर हाइज, तो एक और द लोअर लोज आर आल्सो ऑन द हायर साइड, व्हिच मींस व्हाट, मार्केट जो है ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है. तो एक पॉजिटिव ट्रेंड है मार्केट में. अब अचानक से मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन आई या आपने कुछ चार्ट पैटर्न्स ऐसे देखे ना जिससे ये पता पड़ता है कि नहीं आगे जा करके कुछ हमें रिवर्सल दिखने को मिल सकता है.
राइट। तो वो कौन सी स्पेशल वो पैटर्न्स हैं या टाइप्स हैं जो आपको ऑब्जर्व करने होंगे टू अंडरस्टैंड और टू गॉज दिस काइंड ऑफ अ रिवर्सल। सो अगर मार्केट जैसे ऊपर की ओर जा रहा है, रिवर्सल का मतलब है कि आगे जाकर के ये नीचे की तरफ आ सकता है। और मान लीजिए कि अगर नीचे चला जा रहा है मार्केट, लोअर लोज अगर होता जा रहा है, and the higher highs are also on the lower side, which means that the market is moving towards a bearish direction. Market निचली तरफ ही गिरता जा रहा है। तो हो सकता है आपने जो कुछ पैटर्न्स देखे, चार्ट टाइप्स देखे, उससे आप ये अंदाजा अच्छे से लगा सकते हो कि क्या यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। So that is what is referred to as your reversal. नीचे से अगर वो कंटिन्यूअसली नीचे जाता जा रहा है, अब क्या वहां से वो ऊपर जाने की संभावना है? तो वो जो संभावना वाली बात जब आ जाती है तो आपको वो स्पेशल एक चार्ट टाइप्स होता है, चार्ट पैटर्न होता है, जिसको देखने से आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या रिवर्सल आने वाला है। तो इसके लिए वो कौन से पैटर्न्स हैं जिनकी जानकारी होना आवश्यक है अगर आप टेक्निकल एनालिसिस से अपना स्ट्रेटेजी आप फॉर्मुलेट। So the data can be intraday, it can be daily, it can be weekly, it can be monthly, and the patterns can be as short as maybe fraction of a second, or maybe a day, or as long as many years. Now, the certain trading patterns could be identified through the plot of intraday prices itself, while many patterns may take months of trading data to form. कितना क्लियरली वो पैटर्न आप उसको कैप्चर कर सकते हो। दिस इज व्हाट यू एसेंशियली हैव टू लर्न टू डिवाइस योर स्ट्रेटजी। और कभी कभी आप देखोगे कि कोई जो चार्ट टाइप है जैसे आप देखते हो उसमें आपको कुछ क्लियर इंडिकेशन नहीं समझ में आ रहा है मार्केट क्या उसी दिशा में जाएगा या कोई रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि आप मतलब डिसीजन नहीं ले पाते, मतलब चार्ट टाइप्स आपको कुछ क्लियर इंडिकेशन नहीं दे। उस दौरान यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस एंड इट इज advisable not to enter the market at a point in time once when you are seeing those kind of patterns which are not reflecting anything about the market sentiments and thereby the market। और ये आप भी इस बात से इत्तेफाक रखोगे कि पिक्चर इज वर्थ अ थाउजेंड वर्ड्स। अगर आप एक ग्राफ देखते हो या आप एक चार्ट देखते हो या आप एक पिक्चर देखते हो तो उससे जो आपको जानकारी मिलती है वो कई गुना ज्यादा होती है rather than looking at some kind of a numbers. So when it comes to technical analysis, we know that it's more to do with learning and understanding and interpreting the chart types for your decision making. And once when you come for trading or investing, right? So trading is usually considered for a shorter duration. It can be as short as few seconds or maybe a few days or maybe for a few weeks. But once when we talked about investing is more to do for a long period of time. But that is always debatable. How long is, how long, like whether it is 3 months or 6 months or 1 year. So it all depends upon the kind of how you want to remain invested in the market. For somebody, a long time period may be as high as a week. So for a trader, 1 week may be a very long period, right? So how will you sort of take all these chart types for your decision making is what we are going to learn. And as I said, it's better to use these charts because these charts they interpret a lot. Our several investors they bank upon these charts to tell how the market is going to unfold. Market किस दिशा में आगे जाएगा. Now, the most commonly used chart patterns are the line charts. We usually call them as line and volume charts, or bar chart, or the candlestick chart. Now, amongst all these chart types, जो भी chart patterns आप देख रहे हो,
उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है कैंडल स्टिक चार्ट। और कैंडल स्टिक चार्ट क्यों? क्योंकि इससे आपको जो जानकारी मिलती है वो कई गुना ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द लाइन चार्ट और द बार चार्ट। तो ये जो कैंडल स्टिक चार्ट है, ये सबसे पहले इसका जो it originated in Japan, and it is supposed to be a very relevant and a very significant chart type as it reveals an extra intuitive interpretation. मतलब इससे आप जो इंटरप्रिटेशन करोगे वो कई गुना ज्यादा होगा, कई गुना ज्यादा significant होगा as compared to the other chart types, which is line chart and bar. So इसको अच्छे से समझने के लिए आप ये जैसे एक एक चीज, एक एक चार्ट टाइप की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। जैसा आप अभी अपने स्क्रीन में देख रहे हो कि कुछ ऐसे डायग्राम्स मैंने बनाए हैं, और इनको पहली चीज, इनको कैंडल स्टिक क्यों बोला जाता है? क्योंकि they more or less they look like a candle. जैसे if you see this, okay, then it more or looks like a candle. You know, this is the, you can see this the flame part of it, the light part of it, and this is the body. तो ये बॉडी है और ये जो उसकी जो लाइट होती है, उसकी लॉ होती है, ये वो है। इसीलिए इसको जो है ज्यादातर अगर आप इसको गौर से देखो तो ये कैंडल की तरह आपको दिखता है, and that is why the name candlestick. Now, what you're seeing on your screen is a white candlestick or a green candlestick. मैंने दोनों ही चीज यहाँ पे लिखी है आपके लिए, white candlestick or green candlestick. Now it depends upon what kind of software you have used. आप किस तरीके का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो for this chart patterns. Now कोई सॉफ्टवेयर में जो कैंडलस्टिक है, जैसे यहाँ पर आप हरे रंग का हरा रंग देख रहे हो, कोई जगह पर इसी को मतलब व्हाइट में भी आप देख सकते हो। And if it is white or if it is green, understand that it reflects a bullish sentiment. अगर आप सफेद रंग का कैंडल देखते हो या हरे रंग का कैंडल देखते हो, तो ये सिग्निफाई करता है कि मार्केट इज बुलिश फॉर दैट पर्टिकुलर डे और फॉर दोस पर्टिकुलर टाइम। और अगर ये ब्लैक है और रेड है तो ये दिखाता है कि मार्केट इज bearish on those days or that particular time. Okay, so white or green, whatever it is, it indicates a bullish sentiment, and black or red, काला या लाल, अगर आप देखते हो, अगर कैंडलस्टिक काली रंग की है या लाल रंग की है, तो इसका मतलब है कि उस दिन का मार्केट सेंटिमेंट या उस दौरान, जिस दौरान आपको लाल रंग की कैंडलस्टिक देख रहे हो या काली रंग की कैंडलस्टिक देख रहे हो, उस दौरान मार्केट सेंटिमेंट जो है वो, तो ये एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि सफेद का मतलब क्या, सफेद को आप कैसे, सफेद या हरे को कैसे इंटरप्रेट करोगे, और लाल और काले रंग को आप किस तरीके से इंटरप्रेट करोगे। अब जब once when this part is clear, let us now move to the other aspects of a candlestick. Now what you can see over here on your screen is, you see the candle, and this candle, this green part, what you can see over here, this is referred to as the real body. This is referred to as the real body. और ये जो पार्ट है, जो ऊपर वाला जो एरो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो है, ये इट इज शोइंग यू द क्लोजिंग प्राइस फॉर द डे, उस दिन की क्लोजिंग प्राइस क्या है। ओके ना, और ये आप देख रहे हो जो नीचे वाला पार्ट है, जहां पर आप ये एरो देख रहे हो, ये इंडिकेट करता है कि उस दिन का ओपनिंग प्राइस क्या है या क्या था। तो ओपनिंग प्राइस अगर आप देखो, ओपनिंग प्राइस नीचे की तरफ है, क्लोजिंग प्राइस ऊपर की तरफ है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? दैट द मार्केट इज बुलिश फॉर दैट पर्टिकुलर डे. So let's say it opened at 10 rupees, it closed at 200 rupees. Okay, so since the closing price is over and above the
the opening price, which was 10, right? So if the closing price is over and above the opening price, then it indicates that the market is bullish, right? And this is, you can see this top over here, this particular point. ये point दिखा रहा है कि उस दिन का highest price with respect to that particular stock or commodity or index, whatever it is, उस दिन उस particular, let's say अगर आप index ही लेते हो या stock लेते हो, तो उस दिन का सबसे highest stock price क्या? मान लीजिए रिलायंस है, तो रिलायंस का stock price क्या? तो अगर यहाँ पर आप देख, this actually shows कि उस particular stock का सबसे highest price उस दिन के लिए क्या? So that is indicated by this particular point. और उस दिन का सबसे lowest price क्या था? You just see over here this particular arrow. This indicates the lowest price or lowest price for that, lowest selling or buying price, whatever it is, on that particular, right? So this, ये जो आप देख रहे हो, ये इसको कहते हैं, जो wicks आप देख रहे हो, इसको upper wick कहते हैं या upper shadow कहते हैं, और इसको जो नीचे की तरफ है, इसको हम lower shadow कहते हैं या lower wick. इसको ये जो, since it is green in color, and why it is green in color? Because the closing price is over and above the opening. So this indicates that for that particular day, the market sentiment was very positive. The market sentiment was very much bullish in nature. So किस तरीके का कैंडल है? ये जो है, ये bullish candle, right? और आप यहाँ पर देख रहे हो right side of the screen में, that what is the kind of days range. What do you understand by the term days range? Days range का मतलब होता है उस दिन का highest price क्या था और उस दिन का lowest price क्या था. मान लीजिए किसी स्टॉक का highest price 200 रुपए है और उसका lowest price मान लीजिए 100 रुपीज, तो रेंज आपकी कितनी होगी? हाई प्राइस, highest price minus the lowest price, तो रेंज कितना हुआ? 100 रुपीज का रेंज between the high price and the low price. So range, it tells you about what has been or what is the difference or what was the difference between the highest price of that particular stock and the lowest price of that particular stock. Okay. So if it is a bullish candle, it primarily indicates that the closing price was over and above the low price. Now, so it is, now how will you sort of recognize, इसको आप recognize कैसे करोगे? आप अपने स्क्रीन पर ये देख रहे हो, ये हरा रंग का है जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये दिखा रहा है कि yes, this is indicating that this is a buyers dominated market, or the market sentiment is bullish for that particular day. So ये indicate करता है, it implies normal buying pressure and shows that prices advanced during the day from open to close and the buyers were in, right? So if it is white in color or if it is green in color, it indicates that there was a buying behavior which was witnessed in the market, right? और ये जो लेंथ है, जो रियल बॉडी की लेंथ है, ये नॉर्मल लेंथ रहती है. और जो आप शेडोज देखते हो, तो इसको जो शेडोज बोलते हैं, अपर शेडो एंड लोअर शेडो, ये जो मैंने आपको बताया, अपर शेडो एंड लोअर शेडो. तो ये अपर शेडो और लोअर शेडो इस केस में, मतलब जब आप व्हाइट कैंडलस्टिक देखते हो, तो उसमें, या ग्रीन कैंडलस्टिक जो भी है, उसमें उसका कोई महत्व नहीं होता है. महत्व क्या होता है कि वेदर इट इज ग्रीन or not, and what is the kind of range between high and low, okay, and what is the real body like. तो real body जो इसकी होती है, usually उसकी length जो है वो normal, okay? और जैसा मैंने आपसे कहा कि it indicates a bullish sentiment, लेकिन एक चीज और ये भी दिखा सकता है कि आगे आने वाले टाइम पर मार्केट यहाँ से रिवर्स भी कर सकता है.
और मे बी उस दिन जितने जो खरीदार थे वो सबसे ज्यादा खरीद रहे थे, क्योंकि उनको या कहीं से कोई इंफॉर्मेशन मिली कि आगे जाकर के मार्केट जो है यहाँ से रिवर्स कर सकता है. सो इट may show the continuation of a trend, bullish trend, as well as the reverse. So either ways, so what I'm trying to say is, just by looking at one candle, you cannot jump to conclusions. तो अगर आपको पूरी अच्छी तरीके से decision लेना है, okay, then you have to not only see that particular day's chart, I mean the chart, the candlestick type, but you also should be seeing कि neighboring candlesticks भी क्या दर्शा है. उससे आपको जो है एक बहुत अच्छा इनपुट मिलेगा कि आगे जाकर के मार्केट क्या वही ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, या क्या वहां से रिवर्सल ट्रेंड आ सकता है. So you should not take decisions based on one single candlestick. So एक बहुत ही common statement है कि no decisions should be taken in isolation, which means कि एक चीज को देख करके, simply एक चीज को देख करके आप कोई decision, आप कोई निर्णय नहीं ले सकते. Now, coming to the other candlestick type, which is black candlestick or the red candlestick. So the black candlestick or the red candlestick. Now, if you see over here, in case of, so if the market sentiment is sort of very bearish, the market sentiment is bearish. Now, if it is bearish, then the color of this candle is going to be either black or it is going to be red. Okay. Now, here you will find that in case of a bearish kind of candlestick, the opening price will be at the top. So this is the opening price. Okay, इस प्राइस पर जो है वो बाजार खुला या वो स्टॉक खुला, और इस प्राइस पर वो स्टॉक बंद. तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि the closing price is well below the opening price. The closing price is much less than the opening price. Okay, so what does this indicate? This indicates that for that particular day, the market has fallen. The market has fallen. Okay, and this indicates that the sellers have dominated the. Okay, so this is the highest selling price for the day. You can see this arrow, and this reflects the lowest selling price for the day. This reflects the real body, and in this case, you can see the real body's color is red or it can be black. So it all depends upon किस तरीके का आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो. तो अगर वो bearish sentiment है तो वो सॉफ्टवेयर या तो फिर आपको काला रंग दिखाएगा या फिर लाल रंग. Okay. This is referred to as the upper shadow. This wick, what you can see, this is the upper shadow, and this is referred to as the lower shadow. And this refers to the day's range. And what was the highest price and what was the lowest price. तो ये days range मैं आगे जाकर के आपको बताऊंगी कि how this days range is also used for your decision making. So अभी अगर आप देखो तो अगर days range मान लो कि अगर high price was 1000 rupees and let's say the lowest price was let's say 600 rupees. So what is the days range? The days range is 400. The days range is 400, which means the range is very, very high. Okay. Now, what does this high range signifies? The high range signifies essentially that the market is more on the bullish side. Okay. Market is not able to sort of decide what is exactly going to happen in the near future. Okay. If the range is very, very small, so let's say the highest price is 10 rupees and the lowest price is as low as let's say 8.5 or let's say 9.5. So what is the range? 0.50, which means what? If the range is small, it means that the market is very indecisive as to what is going to happen. So market cannot gauge
what is going to happen in the near future or in the next trading session. तो अगर रेंज बहुत स्मॉल है, तो ये बता रहा है कि the traders, they are waiting for some kind of a strong signal to actually identify which direction the market is going to move from there on. तो डेज रेंज का बहुत महत्व होता है कि अगर डे रेंज ज्यादा है, which means what, this also indicates that there are lot of participants in the market. The days range is on the higher side, then it indicates that there has been lot of market participants on that particular day, both the buyers as well as the sellers. तो आगे जाकर के ये डेज रेंज का और क्या क्या सिग्निफिकेंस है, we will understand. Okay, so days range essentially what it means, what is the difference between the highest price for the day and the lowest price for the day, right? So the black or red candlestick, it implies the normal selling pressure, and it shows that prices declined during the day from open to close, and the sellers were in absolute control of the. और इसकी जो रियल बॉडी की जो लेंथ है, आप देखो जो रियल बॉडी की लेंथ है वो नॉर्मल रहती है, वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती है, बहुत ज्यादा छोटी भी नहीं होती है, इट इज अ नॉर्मल लेंथ. और यहाँ पर जो शेडोज है या जो विक्स जो है, बोथ अपर शेडो और द लोअर शेडो, इसका कोई रेलेवेंस नहीं होता है फॉर द डिसीजन मेकिंग. सो द डिसीजन मेकिंग ओनली कम्स from the color, and which indicates whether the market is bearish or whether the market is so the color essentially reflects whether the market is bearish or the market is bullish. So if it is a red color, it is but understood that it is a sellers dominated market and it is reflecting a bearish sentiment. Now it may also show the continuation of the trend, like the bearish trend, or it may show a reversal, which is quite likely to happen in the near future. But essentially, if you look at a red candlestick or a black candlestick, you are very much sure that the market is bearish in nature. Now, अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो कि इस केस में the opening price or the closing price, आप देख opening price और जो क्लोजिंग प्राइस है वो दोनों एक ही लेवल पर है, so this shows that it is neither a buyer's market, it is not a seller's market. और इस टाइम पर the market is said to be, so the market participants, उन लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मार्केट आगे जाकर के किस तरफ अपना रुख करेगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा या ये नीचे की तरफ जाएगा. तो इस टाइम पर जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो वेट कर रहे हैं एक ट्रिगर का, एक इंफॉर्मेशन मार्केट में आने का, सो दैट अकॉर्डिंगली दे विल एक्ट अपॉन इट, या तो फिर खरीदेंगे या तो फिर. सो अगर इस तरीके का आप कैंडलस्टिक टाइप देखते हो, ये दर्शाता है कि मार्केट उस दिन के लिए मार्केट वाज. Next is the long day candlestick. Long day candlestick. आप देख रहे हो long day candlestick में yes, right. So ये long day candlestick में आप देख रहे हो कि there is a white, it can be both white, it can be both black. So white may be bullish, white is bullish, black is bearish. So what is a long day? A long day represents a large price movement from open to close, where the length of the candle body is long. Remember I spoke about the range. So this is that range which is what I am referring to. कि उस दिन का closing price क्या था और उस दिन का opening price क्या था. तो जितना ज्यादा दोनों में variation होगा, length उतनी ही, candle की जो length है वो उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, उतनी ही ज्यादा बड़ी हो जाएगी. Okay? So that is why this is referred to as this kind of a chart pattern, whether it is white or whether it is black. Okay,
It is referred to as a long day candlestick. And why long day? Because it indicates, ये दर्शाता है कि उस दिन का price movement जो है बहुत ज़्यादा हुआ है. Okay, so a large price movements from open to close, which means let's say open हुआ मान लीजिए 100 रुपए पर, close हुआ मान लीजिए 400 रुपए पर. I'm just giving an example. So what is the kind of a price movement on that day? 300 rupees. और किसी भी स्टॉक के लिए अगर 300 rupees जैसा चेंज होता है, so it is a very very massive, बहुत ही बड़ा एक ये change है. Right? So here this change between the open and close is shown by the length of the candle. Candle की length कितनी है, जो real body है, that is this part. This is the real body. Okay. So higher the length or more the length, it will indicate that there is a very long variation or a very big variation between the opening price and the closing price. Now, it can be a long white candlestick or a long green candlestick, right? So a long white candlestick, it implies relatively strong buying pressure and shows that prices advanced during the day significantly from open to close and the buyers were very impressed. How will you identify? इसको आप कैसे identify करोगे? That the length of the body is very real body is on the longer side. Now, as I said, what long white candlestick actually represents? It represents that the trader's behavior is very okay. या तो फिर another इसका जो एक दूसरा एक way of looking at this is, it may show a potential turning point and might suggest that prices have reached a support level after an extended decline. Okay? So market it is trying to seek a support level. Okay, after एक लंबे अरसे के बाद, एक डिक्लाइन के बाद मार्केट एक सपोर्ट लेवल तक आ गया है. ओके, और उसके बाद ये दर्शाता है कि इससे ज्यादा वो नीचे अब और नहीं जाएगा. If you get to see an extended decline and then you get to see a long white candlestick. So if it is seen after a long and significant rally, it may point to be excessively bullish and that prices are dangerously at high. आपको ये सजग भी रहना पड़ेगा कि अगर ये एक चार्ट पैटर्न, अगर आप एक लंबे समय तक रैली देख रहे हो और उसके बाद ये चार्ट पैटर्न आप देख रहे हो, तो इसका मतलब है कि मार्केट इज वेरी बुलिश एंड द प्राइस लेवल्स आर डेंजरसली. तो जब प्राइस लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, which means what that we refer to as it is overbought, then it is quite likely that from there on the market will fall. तो जब आप ये long white candlestick देखते हो, तो it acts as a, you should be again cautious about it as well. ठीक है? तो so not only it is indicating a buyer's pressure or a buyer's market, but since the prices are too much on the higher side, it indicates that it might have reached a dangerously high level and a fall is more likely from there on, which means वहाँ से हो सकता है market थोड़ा नीचे, market में थोड़ा सा correction. Now उसी तरीके से long black, जैसे long white होता है वैसे ही long black होता है. A long black candlestick or long red candlestick. Okay. So the long black candlestick, it relates to a strong selling pressure and shows that prices decline during the day significantly from open to close. तो इसमें अभी open कौन सा है? Open is this, because ये red है, red candlestick है, तो bearish sentiment दिखाता है. Which means what? इसका open कौन सी जगह पर होगा? इसका open will be this. Its open is going to be this. So this is the opening price, okay, and this is the closing price. So what do you see? Since the opening price, this is the opening price, right? Because it is a red candlestick, where it's going to be its opening price
here it's going to be its opening price. And which is going to be its closing price? This is going to be its closing price, which means what? Open is much above the closing price. Okay, which means what? It indicates that this is a bearish market, and in this case there is a, and since the range is very high between the close and open, the range is very high, it indicates that there is a very strong selling, which means मार्केट में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आ रही है, बल्कि और नेगेटिव न्यूज आ रही है ना? उस दिशा में you will get to see a long black candlestick or a long red candlestick. Okay, so this indicates largely a bearish trend. However, it may show a potential turning point and suggests that prices have reached a resistance level after an extended rally. And quite likely, यहाँ से हो सकता है आगे जाकर के reversal. Okay, so if it is seen after a long decline, it may signal panic or capitulation. So a final sell-off attempt before the bulls regain the. Okay, so आप इसको कैसे identify करोगे? You have to identify it by looking at the length of the real. Okay, and what essentially it indicates? It indicates a selling pressure. एक तो ये, दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि अगर बहुत दिन तक ये लॉन्ग डिक्लाइन, मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आ गया है और उस दौरान अगर आप इस तरीके का लॉन्ग कैंडलस्टिक देख रहे हो, which means आगे जाकर के quite likely हो सकता है कि आगे जाकर के बुल्स जो है मार्केट को दोबारा से कंट्रोल कर ले, and that it is the final attempt to sell. Okay, so a final sell-off attempt for the bulls, they regain the control. Okay, now let's come to another chart. What do you see over here? जो अपना long candlestick था, whether it was black or green, इसकी real body बड़ी थी. यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? यहाँ पर आप देख रहे हो कि the real body, this is the real body. So this real body is very short, or it's very small. So this kind of a candlestick pattern is referred to as the short days. Okay? Now you can have white short days, or you can also go on to have the black short days. So white or green, or it can either be black or white or green, or it can either be black or red. Now, what does a short white candlestick reflect? So if it is a short white candlestick dates, okay, then you will see this kind of a candlestick pattern. आप क्या देख रहे हो? यहाँ पर कि जो real body है, इसकी जो real body है, वो बहुत छोटी है. Which means what? There is the range between the closing price and the opening price. So here, what is going to be the closing price? This one, the top part. So since it is green, okay, it is indicating a bullish sentiment. Okay, तो आपका market, आपका जो closing price है वो top यहाँ पर होगा, ऊपर की तरफ, और आपका जो closing price है, आपका जो closing price है वो top पर होगा, और आपका जो opening price है वो नीचे की तरफ. So of course it indicates that the market is bullish, but since the range is very less, it indicates a relatively weak buying pressure. So I just repeat it for you. In case of short white candlestick days, you can see that the price over here, this will be reflecting the closing prices. And the bottom part over here, this will be reflecting the opening price, So since the closing is over and above the opening, of course, it reflects a bullish trend. But since the variation or the range between the closing price and the opening price is very small, it indicates a relatively weak buying pressure with a limited price movement. Okay. So हो सकता है
कि since the buying pressure is very weak, okay, it might indicate that the trend continues. It may show the continuation of a trend, or it might indicate a kind of a reversal. It might indicate that from there on the bearish trend might set. Okay? लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि आप सिंपली एक कैंडल स्टिक टाइप देख करके या पैटर्न देख करके आप कोई डिसीजन मत लो. क्यों? क्योंकि whenever, as I said before also, decisions should never be taken in isolation. आपको ये देखना है कि उसकी नेबरिंग कैंडलस्टिक्स क्या थी और उस दौरान किस प्रकार की इंफॉर्मेशन मार्केट में, तो उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या इसी तरीके का वीक बाइंग प्रेशर इज इट गोइंग टू कंटिन्यू और is there a possibility of a reversal, which means what, market क्या वहां से नीचे की तरफ जा रहा है. Okay? So you have to be very careful on. Okay, so this was your short white candle stick. Okay, either you short white or short green. Next is your short black, or it can be red also. Okay? So short black candlestick days, or it can be short red candlestick days. It can be either which ways. Okay? But here, if it is black or a red, तो black और red का मतलब क्या है? The real body. ये इसको जो real body मैंने आपको बताया था पहले. So this real body, if it is red in color or black in color, it indicates a bearish sentiment. Again, since the range between the opening and close is very less, so since this is a red kind of a candlestick, where is going to be the opening price and the closing price? So in this case, since it is a bearish, it is reflecting the color of this real body is red, it is reflecting a bearish sentiment. And what do you gauge from this? इससे आपको क्या समझ में आता है कि इस केस में जो ओपनिंग प्राइस है वो यहाँ पर है, ऊपर की तरफ है, और जो क्लोजिंग प्राइस है वो नीचे की तरफ है. तो अगर क्लोजिंग प्राइस नीचे की तरफ है, मींस व्हाट, मार्केट इज हैविंग अ बियरिश सेंटिमेंट. एंड सिंस द रेंज इज वेरी लेस, रेंज मींस व्हाट, the range essentially means the difference over here. So when I'm talking about the range, in this case it is the difference between the opening and the closing. Okay? The opening and the closing. So opening is over here and the closing is over here. So let's say open हुआ था let's say 10 रुपए पर, close हुआ है 9. let's say 80. तो कितने का डिफरेंस है? डिफरेंस इज ओनली 0.2. छोटा सा डिफरेंस है, पर डिफरेंस तो है. So since the opening price is over and above the closing price, it definitely indicates a bearish sentiment. But of course, it is implying a relatively weak selling pressure with a limited price move. तो हो सकता है कि अगर आप इस तरीके का चार्ट पैटर्न देखो, इसका मतलब ये हो सकता है कि आगे जाकर के ये bearish sentiment कंटिन्यू भी कर सकता है, और हो सकता है कि यहाँ से मार्केट जो है ऊपर की तरफ भी जा सकता है ना. यहाँ से मार्केट रिवर्स भी हो सकता है. तो अगर नीचे की तरफ आ रहा था तो यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता. तो ऊपर की तरफ कब जाएगा, क्यों जाएगा, या वही ट्रेंड डिक्लाइन का ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको देखना है कि उस दौरान उस समय किस प्रकार की न्यूज मार्केट में आ रही है. और आपको ये भी देखना है कि आज जो पहले दिन के जो कैंडलस्टिक थे, पिछले टाइम पीरियड के जो कैंडलस्टिक थे, वो क्या रेड कलर के थे, या वो उनका रियल बॉडी क्या था, क्या वो बहुत बड़ा था और अब धीरे धीरे छोटा हो जा रहा है. तो मान लो अगर आप देखते हो कि जो पहले टाइम पीरियड के जो रियल बॉडीज थे वो रेड इन कलर थे और उनका रेंज बहुत ज्यादा था, okay, then it indicates that it might be that the bearish trend might continue. ये हो सकता है. लेकिन अगर वो रेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर वो बहुत छोटा होता जा रहा है, बहुत ही छोटा होता जा रहा है, मतलब मान लीजिए कि 0.0025 पैसा है ना, और
उसी टाइम एक पॉजिटिव न्यूज भी आ रही है, तो हो सकता है कि देयर मे बी रिवर्सल ट्रेंड व्हिच मे बी विटनेस्ड इन द मार्केट मूविंग. So you have to be very cautious as to how to sort of gauge किस तरीके से इन चार्ट टाइप्स को हम इंटरप्रेट करेंगे फॉर माय डिसीजन. और उसके लिए आपको सिर्फ उसी दिन का चार्ट टाइप या चार्ट कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं देखना है, आपको पिछले टाइम पीरियड का, ना चाहे वो फ्यू सेकेंड्स का हो या कुछ घंटों का हो या कुछ दिनों का हो, उनका जो है चार्ट पैटर्न्स आपको या चार्ट टाइप्स आपको देखना, जिससे आप ये समझ सको कि क्या ये पैटर्न आगे कंटिन्यू करेगा. और अगर रेंज धीरे धीरे जैसा रियल बॉडी अगर बहुत ऊपर से बहुत छोटा होता जा रहा है, मिनिमम रेंज होता जा रहा है between the opening price and the closing price, and there is a positive news which is coming in, then वहां से reversal. Next is we come to white Marubozu. So what is white Marubozu? It's a long white body with no shadows on either. Now shadows, you know, वो पहले जो मैंने आपको बताया जो wicks थे दोनों तरफ के, उनको shadows बोलते हैं, upper shadow and lower shadow. तो अगर आप long white body देखते हो, which is called as, अगर जिसमें भी कोई shadow lines नहीं दिखती है, then it is referred to as Marubozu, right? And here, since you are seeing a white Marubozu, so it reflects that the market sentiment is very, very bullish. It reflects that the market sentiment is very bullish because it is white, or it can either be green in color also. Because it is bullish, it can either be white or it can be green in color. Alright? So as you can see that there is no shadow on either end. ना तो ऊपर की तरफ कोई विक दिखाई दे रहा है, ना नीचे की तरफ कोई विक दिखाई दे रहा है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि whatever, so since it is white, it means that the highest the highest price for the day was equal to the opening price. The highest price for the day was equal to the closing price. Okay? So since it is a white Marubozu, it indicates that the market sentiment is very, very bullish. And since you are not observing any wicks or any shadows on either side, it indicates that whatever was the closing price for the day was also the highest price for the day. Okay? And also, whatever was the opening price for the day, also happened to be the lowest price of the day, Okay, so I repeat this part, this is important. The highest price of the day, okay, was also the closing price of the day, and the opening price of the day also happened to be the lowest price of the day, which means what? This kind of a chart type or this kind of a chart pattern where you witness that the opening price is equal to the low of the day and the closing price is equal to high of the day, it indicates that the market is extremely, extremely bullish, and it is characterized by a long white body having no shadows on either end, which means that for that time period, okay, the buyers control the price action from the first trade to the last trade. So you have to be very, very careful. Why? Because since the market sentiment is extremely bullish, the prices may be dangerously at high levels, and there are chances that from there on, the market can take a slight correction. Why? Because if it is very, very bullish, it indicates that the market is over. हो सकता है कि उसके बाद थोड़ा सा आपको correction. Okay. So as I said, you should not take your decision only by looking at one chart type. आपको देखना है कि neighboring days के जो chart types थे वो कैसे हैं. But if you look at this trend continuing, okay,
It also, and there is also all the possibilities that it continues आगे जा करके might take a long position in the market you want to buy, but provided that there is a lot of positivities which is existing in the market. Next we come to white opening articles. So यहाँ पर आप देख रहे हो, it represents a bullish sentiments in the market, and it is characterized by a long white body that has an upper shadow but no lower shadow. Okay? And in this case, you find that the body of the candlestick is white, but it can also be green in color, and it is usually long. It is usually long. And there is no lower shadow, but of course, there is always an upper shadow which is witnessed. So a white opening Marubozu, it indicates that buyers control the price action from the first trade to the last trade. Okay. So this is a very important thing. While you, so if you go on for trading, okay, and if you sort of witness this kind of a market, then you understand that probably the market going ahead is also likely to be bullish as well. And accordingly, you can take your position. Accordingly, you can take your kind of a position. So in this case, if you see, the most important and the most striking thing is that the day does not close. Do you see this? The day does not close at the high of the day. This is a word of caution. The day does not close at the high of the day. ये क्या दिखा रहा है? ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये दिखा रहा है what was the highest price for the day. लेकिन जो closing price for the day क्या था? वो यहाँ पर था, है ना? Closing price for the day is positioned over here, and this is the highest price for the day. Okay? And this indicates that whatever was the opening price also happens to be the lowest price for the day. Whatever happened to be the opening price also happened to be the lowest price of the day. And here it is indicating that whatever was the, here it is indicating that the highest price of the day was not in tandem with the closing price. So you can see that the closing price was slightly below the highest price, and that is why it creates an upper shadow. Okay, so by and large, it represents a bullish sentiment, and it also indicates that the markets are dangerously at high levels. Okay, so this is your white opening Marubozu, wherein you witness a long white body that has an upper shadow, but it has got no lower shadow. Okay, and indicating a strong bullishness or a strong positive sentiment existing in the market. Coming to white closing Marubozu. Now यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर जो shadow है वो नीचे की तरफ. So what is it indicating? It also represents a bullishness, but it has a shadow on the opening side. It has a shadow on the opening side, but not on the closing side. So it means that the day opens and the prices go slightly lower, forming a lower shadow. Okay, but at the same time, as the day passes by, it also indicates that the buyers, they have controlled the price action from the first day to the last trading point in time. So the day opens and the prices go slightly lower, forming a lower shadow. But if you look at the closing prices, the closing price are way above the opening price, and even the highest price is equal to the closing price. So generally, this represents this white closing Marubozu. It represents a very strong bullish sentiment, and of course, you can say that the prices again are at dangerously high level. And going ahead, the market might witness some kind of a. Now let's move to the black Marubozu. तो जो white Marubozu था, वो essentially reflect कर रहा था बहुत ही strong bullish sentiment, और जो black Marubozu है, वो reflect करता है a negative sentiment. Okay, तो
ये है आपका ब्लैक मारिगोल्ड, यहाँ पे कोई शैडो आपको नहीं दिखती। Okay, so usually, as you can see from this particular chart type, this candlestick type, that the black body of the candlestick should be longer relative to other candlesticks on the chart, and shadows do not exist. So this kind of a chart type, it indicates extreme bearishness and is characterized by a long black body. और यहाँ पर आप कोई shadows नहीं देख रहे हो, ना तो ऊपर की तरफ कोई shadow है या विक है, ना नीचे की तरफ कोई शैडो या विक है। तो ये दिखा रहा है कि मार्केट जो है बहुत ही निचले स्तर, बहुत ही ज्यादा निचले स्तर पर है, और इट में शो अ पोटेंशियल टर्निंग पॉइंट। नाउ अ वर्ड ऑफ कॉशन, नाउ इट में शो अ पोटेंशियल टर्निंग पॉइंट एंड सजेस्ट that prices have reached a resistance level after an extended rally. And if it is seen after a long decline, it may signal panic or a final sell-off attempt from the sellers before the bulls they regain the control. Okay, so this is your black Maribozu, where essentially the market sentiment is bearish. लेकिन अगर ये बहुत देर तक, इसको बहुत दिनों के लिए अगर आप ऐसा ट्रेंड आप देखते हो, तो इसका मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि इट में सिग्नल पैनिक इन द मार्केट, एज इन अ फाइनल सेल ऑफ अटेम्प्ट from the sellers before the buyers they regain the control. So essentially you have to see what is the market, what is the news which are coming in the. Next is your black opening Maribozu. Okay, तो ये भी दिखाता है कि मार्केट देख रहे हो, ये नीचे की तरफ ये शैडो, नीचे की तरफ ये विक है, तो ये अगेन दिखाता है कि मार्केट सेंटिमेंट जो है बहुत ही bearish है. The market sentiment is very very bearish, and it is characterized by a long black body that has a lower shadow but no upper shadow. Okay, so what it means is it has a shadow on the closing side but no shadow on the opening side, which means what, उस दिन का प्राइस जो है, उस दिन का जो आपका जो क्लोजिंग प्राइस है और उस दिन का जो लोअर प्राइस है, तो लोअर प्राइस जो है आपके क्लोजिंग प्राइस से और भी ज्यादा निचले स्तर पर था. और द मोमेंट यू लुक एट अ ब्लैक बॉडी, where is going to be the opening price? The opening price will be at the top. And where is going to be the closing price? The closing price will be at the bottom. तो अगर क्लोजिंग प्राइस के नीचे, अगर the lower price of the day अगर वो क्लोजिंग प्राइस के भी नीचे है, तो ये then it results into the formation of a lower shadow. और ये दिखा रहा है कि मार्केट सेंटिमेंट्स और भी बियरिश है, मार्केट सेंटिमेंट्स उस दिन के लिए और भी ज्यादा बियरिश की तरफ मूव कर रहे हैं. ठीक है, so you have to be very careful, and it is good. So if you now just see how you will use it for your decision making. If you are waiting, if you are planning to buy that stock, maybe this is a good time to buy, because you are getting it at a very cheap rate. So the thing is that how you interpret it, and what kind of a position you want to hold going ahead. अगर आप सेलर हो तो और ये ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, तो आप सोचोगे कि जो मिल रहा है चलो उसी पर बेचो, because you never know when this, if that kind of a bearish trend is coming for a long period of time, and if it is going down and down with every successive trading period, then you will say, okay, fine, it is better to sell, because now you get to see the black opening Mariposa, which means that it appears that this trend is likely going to sort of continue. But understand, if it is seen after a long decline, okay, it may signal a panic and a final sell-off attempt from the sellers before the bulls they regain the. So understand what kind of sort of position you want to hold up. अगर आप बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हो उस स्टॉक के बारे में कि आगे से ये स्टॉक यहाँ से बढ़ेगा, by looking at the black opening Marubozu, then maybe that's the best time for you to buy, because you are getting it at a very cheap rate. But at the same time, you are also seeing a potential in that stock. So how will you sort of use all these chart types for your decision making? That depends upon what is your thought process about the potential of that
stop. And of course, the kind of information which is coming in the market. और अगर आप देख रहे हो कि कोई पॉजिटिव इंफॉर्मेशन नहीं है, ऐसे ही वो ब्लैक ओपनिंग मारिबोजू डे आफ्टर डे चला आता है, आ जा रहा है, then you can wait for a further fall. हो सकता है मार्केट वहां से और भी ज्यादा गिरे, तो ज्यादा जितना गिरेगा and you are waiting to buy, then you wait for that kind of a position. So that is what I'm saying, that it depends upon what is your objective. लेकिन अगर सेलर ये देख रहा है कि नहीं मार्केट में ब्लैक ओपनिंग मारिबोजू है, तो सेलर क्या करेगा, उसी पॉइंट पर, और कोई पॉजिटिव इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, तो सेलर कहेगा ठीक है इससे ज्यादा और नीचे गिरे, इससे ज्यादा नीचे गिरे, अभी नीचे. So that is how it has to be interpreted. Now we are having the black closing Maribozu. The black closing Maribozu में जैसा आप देख रहे हो यहाँ पर, this also indicates an extreme bearish kind of a movement, and it is characterized with a long black body, okay, as you can see over here, that has an upper shadow but no lower shadow, which means it has a shadow on the opening side but no shadow on the closing side. Okay, so it means that the sellers control the price action from the first trade to the last trade, and the day opens and the price goes slightly higher, forming an upper shadow. Higher का मतलब है this is the highest trading point for the day, or the highest trading price for the day. This is the opening price and this is the closing price. So since the closing price is much below the opening price, of course this has to be a black body or a bearish sentiment. But यहाँ पर there is a ray of hope. Why? Because as you can see, the highest price for the day was over and above the opening price. तो हो सकता है यहाँ से जाकर के market might reverse from here on. तो अगर वो decline होता जा रहा है for a long period of time, यहाँ से market हो सकता है आगे जाकर के, and of course with the kind of information which is coming in, market आगे जाकर के ऊपर की ओर जा सकता है. Why? Because the highest price for the day was on the higher side as compared to the opening price. There may be a possibility. So if it is seen after a long decline, it may signal a panic or a final sell-off attempt before the bulls they regain the control. So this was a black closing Maribozu, and wherein you find that the body is usually long, the real body is long, and that there is no lower shadow, but there is an upper shadow. Okay, an upper shadow essentially indicates that for that particular day, the day opens and the price it goes slightly higher, thereby forming an upper shadow, and most likely the bulls might take control. So again, as I said, you should not look at one particular aspect, but you have to look at the other aspects as well to take your decision. Okay, so yeah, ये हमने आपको कुछ चीजें बताई as to how to sort of interpret the market. Okay, from all these sort of candlesticks, और आगे जा करके हम लोग और भी चार्ट टाइप्स देखेंगे, कैंडलस्टिक चार्ट टाइप्स देखेंगे. बहुत सारे हैं, जैसे स्पिनिंग टॉप्स है, डोजी क्या होता है, शूटिंग स्टार क्या होता है. आगे आने वाले सेशंस में हम लोग इस पर और डिस्कस करेंगे, और ये देखेंगे कि ये सब चार्ट टाइप्स को देख करके या कैंडलस्टिक टाइप्स को आप देख कर आप किस तरीके का डिसीजन बहुत अच्छे से ले सकते. So I hope that you have benefited from this particular session of technical analysis, and when we meet next, we are going to have more understanding and more clarity with respect to the other candlestick chart types or the chart. Thank you so much.